Assalamu alaikum, and I'm Shafiq Ahmad Channa. So today we are going to start with the adjective. असां कल डिस्कस कयो हो noun, pronoun, and अॼु असां start कयूं था adjective. Now, what is adjective? Adjective is a describing word, or adjective is a word that modifies a noun or pronoun. Adjective वो लफ्ज़ है जो noun या pronoun जे बारे में वधीक असांखे ॿुधाए. Now let's see the example. There are 3 small black wooden chairs in the room. Now let's see that there are 3 small black wooden chairs in the room. In the room में कई किस्म जी chairs आहिनि, ठीक है? Now let's see, the first is 3 small black wooden. ये सब लफ्ज़ जेके describe था कन, modify था कन के room के. रूम में घणी चेयर्स हुयूं, कहिड़ी चेयर हुयूं, कहिड़ो कलर ऐं कहिड़ी साइज या शेप जूं हुयूं. सो वी कैन सिंपली से दैट एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक, द फर्स्ट एग्जांपल इज दिस. सेकंड इज द फूड वाज हॉट एंड डिलिशियस. Now in this sentence, the food was, food kidi kisam jo ho. Number 1, hot and delicious. Now sometimes adjective comes before a noun. Hame room kha pehriyan aaya 3 small black and wooden. But in some cases adjective comes before the noun. Kidi kisam jo food ho. So food was hot and delicious. Adjective can describe color, it can modify size, it can modify sound, it can modify origin, it can modify texture, shape. It means that जो को noun adjective आहे वो noun जे बारे में असांखे further मालूमात ॾींदो आहे, addition ॾींदो आहे, ठीक है? Color can be blue, green. Size can be huge or little. Sound can be loud, noisy. Shape will be oval or maybe rectangular. Origin will be, we can say Pakistani, Italian. Texture will be rough or smooth. So these are the examples of adjective that describes or modifies a noun or a pronoun. वो color भी सके तो size, sound, shape, texture, etc. Now we are going to start activity. My name start with the S letter, Shafiq. हाँ आगे वो adjective सोचना है जेको उन्हीं letter से start थे S सां. अगर जाना लोग B सां है तो adjective B समझे. ताप आगे पाना here introduction इधर. Let's example. I am smart Shafiq, or I am shy Shafiq, I am sincere Shafiq. ठीक है, ताको एक example दो. Now let's start with the first student, or with the main example. Okay, so I can say I am brave Bakhtawer. I am bold Bakhtawer. So this can be the adjective according with the alphabet, first alphabet of my name. Okay, brave Bakhtawer, brave is adjective, bold Bakhtawer, adjective. So okay, next you. Yes sir, my name is Asif. Active Asif, Good. Attractive Asif, ambitious Asif. Excellent. That's it. Okay, these words active and attractive, this shows your description. ताके define रखन तो अच्छा होगा. Attractive, attentive, active, very good. You share example. Do you Dania? Yes. Okay, any adjective that start with the D?
Try. Are you? Any? Can you help him out? Demanding dollar. Is demanding an adjective? Okay, here. It's okay too. So these are the words that describes or modifies a noun or pronoun. Itanke describe a noun. Now let's start with the adjective. As I here discuss that adjective describes or modifies a noun and pronoun, and it indicates quality, size, shape, and duration. The examples are given on the board. Adjective usually provide relevant information about the nouns or pronouns. Adjective asanke information indo ya modify kanda how many, what kind, which one, and how much. Next. Okay, see the example. The team has a dangerous batsman. I have 10 candies in my pocket. I love red car. I earn more money than he does. Hane kero batsman dangerous. Ketri candies, 10 candies, kedi car, a red car, and more money. These words, dangerous, 10, red, and more, describes noun or a pronoun. These are examples of adjective. Now, types of adjective. Number one is descriptive adjective. Descriptive means ke shay ke bayan kar, unhe bare further additional information there. So, you can describe a person, place, thing, or animal. A descriptive adjective is a word that describes a noun and pronoun. These are also called qualitative adjective. इन्हें के साथ ना qualitative adjective छो ते के मानुजी के जगह के शेजी quality असान बुधाइना. And participles are also included in this type of adjective. Participle means in form of verb. Sometimes they give the meaning of the adjective, so that's the reason they are also called descriptive adjective. Descriptive adjective examples. I have a fast car. I am hungry. The hungry cats are crying. I saw a flying eagle. Hane fast, hungry, and these are easy because they describes noun. Hane eagle ka per jo lafza flying basically in form of verb hai participle, but hitte meaning de to descriptive words. That's the reason it is also adjective, descriptive adjective. Quantitative. Quantitative mana ke sheji quantity budaya, quantity. Now a quantity adjective provides information about the quantity of the noun or pronoun. This type belongs to the question category of how many and how much. How many is used with the countables. Jeki shesa count kar saku asa use karna how many. How many boys? Boys are countable. How much milk? How much inegre, which is milk is uncountable. Examples. I have 20 bucks in my wallet. It is basically how many. Okay. They have 3 children. How many children? You should have completed a whole task. How much task? So this is how many, and how much. Proper adjective. कल ऐसा discuss किया proper pronoun. आज है proper adjective. Proper adjectives are the word adjective form of proper pronoun. When proper pronouns modify or describe other noun or pronoun, they become proper adjective. जरी proper तांजो जो pronoun है वो describe करेगी बे noun के तो वो जीवितो proper adjective. Example. And proper adjectives are usually capitalized. जी ऐसा proper noun capital लिखना हो. For example, काजी आज़म the Q capital से लो. शफीक अहमद the S very capital अहमद जो A. Same नमूने proper adjective भी capital होना. Example. American cars are very strong. Which cars? American cars. American जिको तांजो adjective है. हाने proper adjective. तो जो A है वो capital letter है. Chinese people are hard worker. I love KFC burger. हाँ ये जिक्के भी ताजे adjective one proper. इनमें ताजे नो first letter जो का वो capital है like proper nouns. Next. Demonstrative adjective. Demonstrate means to point out someone or something. I कल discuss with you proper pronouns में that this, that, these and those, these are basically demonstrative. A demonstrative adjective describes directly to these words. Okay? Now demonstrative pronoun works alone and does not precede a noun. हाँ फर्क ये आ जो कल मैम डिस्कस किया proper तांजो demonstrative pronoun वो अलग थी विंदुआ पर जो demonstrative adjective होता वो हमेशा follow कंदुआ noun के that comes before the noun. फर्क ये Next.
Examples: that building is so gorgeously decorated. Honey, building is a noun. Building का प्रयोग है that. So that is why it is which adjective? Proper. Okay. This car is mine. Which car? This car. These cats are cute. These flowers. So these words they come before noun. Okay. Possessive. Possessive means possession, ownership, kinship, belonging, kinship, anuje. तो उन्हें के चेको possessive adjective. Let's suppose example: are, my, his, her, our, their, your. ये जिके ब्लगर ये शो कन था possession, ownership, belonging, my car. ठीक है? Next. My car is parked outside. Whose car? My car. माना मुझी car. It shows possession. Next is his cat is very cute. Whose cat? His cat. So these words my, his, our, her, here shows possession. Next. Interrogative adjective. An interrogative adjective asks a question. An interrogative adjective must be followed by a noun or pronoun. We love JK sang use करना चाहिए adjective सागर. We उन्हें जो interrogative adjectives. Which, what, whose. These words will not be considered as adjective if a noun does not follow right after them. अगर इन्हें लफ्ज़न का कोई noun न हो दो, तो this is not interrogative adjective. Example next. Which phone do you use? हमें phone जो कहते थे noun है, अहीं चाहे adjective. वो इन्हीं के adjective बार इनका पेड़ पवार में चाहे noun है. That's the reason we can say it is interrogative adjective. What game do you want to play? Whose car is this? और ये जिके बोर्ड and which, what, whose इनका बाद में noun है. That's the reason it is interrogative adjective. Indefinite. Indefinitive adjectives, as the name suggests, modifies in नालिमाइज़ are indefinite. माना काशे सांगे specific न हो जी. असल में जिके क्या adjective है वो specific manner में show करना है. But this indefinite shows non-specific. माना किसी जी मिक़दार सांगे या quantity exact मालूम न हो जी. इन्हीं करेंगे के जवाब indefinitive adjectives. The common indefinite adjectives are few. Few आने खबर ना कितना. Many भी घना पर कितना we don't know. This is indefinite. Most, much, each, either, neither, nobody, several. ये लफ्ज़ हैं indefinite adjectives. Next example: I gave some candy to her. और some candy कुछ और इमु खबर ना तब या चार quantity definite कोनी. That it is non-specific manner. So this is some, few, several. और ये जिके लफ्ज़ हैं ये शो कौन था indefinite adjective. Indefinite adjective. Okay, compound adjectives. When a compound nouns combined words modify other noun, they become a compound adjective. जब बे noun पाने मिलन, ऐ उनके बे noun के modify करता उचिनो compound adjective. This type of adjective usually combines more than one word in a single lexical unit and modifies a noun. They are often separated by a hyphen. अच्छा एक भी important point है जब compound adjective होंदो तो वो जब लफ्ज़ होंदा उन्हें बीच में hyphen होंदो. That would be compound adjective. For example, I have a broken down sofa. हाँ ये लफ्ज़ ये hyphen सा follow. I saw a 6 foot long snake. ये चाहे compound adjectives. The degrees of adjective. This is most interesting part. There are 3 degrees of adjective. One is positive, next is comparative, and the third is superlative. Now, the first degree, the positive. If we are describing one noun, असा कि हिकड़े माण्हू या कई जगह या जानवर के हिकड़ी ॻाल्हि कयूं था त असां यूज़ कंदासीं पॉजिटिव. ऐं अगर असां ॿिनि खे कंपेयर कंदासीं त लफ्ज़ जेको निकितल आहे उहो कंपेरेटिव मां ई निकितल आहे. तो उनके जब comparative ऐं अगर ॿिनि या ॿिनि खां मथे ॻाल्हि कंदासीं त we will use superlative. So first we are going to start the positive. The positive degree of an adjective makes no comparison. असां कीअं हिकड़ी नाउन जी ॻाल्हि कंदासीं हिकड़े खे डिस्क्राइब कंदासीं त सिंपली असां पॉजिटिव डिग्री यूज़ कंदासीं. A tall building. हाणे हिकड़ी बिल्डिंग जी ॻाल्हि थिए हिकड़ी बिल्डिंग खे डिस्क्राइब कयो आहे कहिड़ी बिल्डिंग tall. The simple positive adjective means ईंदो.
She runs fast. Fast. Okay. This is a beautiful car. Which car? Beautiful. And a car bhi clear hai. And she, a one girl, and building one. तो जैसे असां खे हिकिड़े नाउन खे डिस्क्राइब कंदासीं त असां पॉजिटिव डिग्री यूज़ कंदासीं. नेक्स्ट, कंपैरेटिव नाले मां ई ज़ाहिर इट सजेस्ट द नेम कंपैरिजन. जॾहिं असां ॿिनि माण्हुनि जो कंपैरिजन कंदा आहियूं त असां डिग्री कहिड़ी यूज़ कंदा आहियूं? कंपैरेटिव. द कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स टू पीपल, थिंग्स, एक्टिव और क्वालिटीज. कंपेयर जो असां कंदा आहियूं कंपैरिजन उहो ॿिनि में ई कंदा आहियूं. फॉर एग्जाम्पल, अ टॉलर बिल्डिंग देन दिस वन. हाँ, that is no अॻ में हुयो टॉल पॉजिटिव, पर हिते कंपेयर डिग्री कहिड़ी आहे? टॉलर. असां जॾहिं ॿिनि जो कंपेरिजन कंदासीं त कहिड़ी डिग्री यूज़ कंदासीं? कंपैरेटिव. अ टॉलर बिल्डिंग देन दिस वन. इट मीन्स असां ॿिनि बिल्डिंग जी पाण छा था कयूं? कंपैरिजन. त ही बिल्डिंग जेको आहे सो ॿी बिल्डिंग खां टॉलर आहे. शी रन्स फास्टर देन आई डू. माना हू मूंखां वधीक फास्टर वञे. माना ॿिनि जो कंपेरिजन आहे मुंहिंजो ऐं आई, शी एंड आई. ठीकु. तॾहिं असां हिते फास्ट को यूज़ कसां? फास्टर. जॾहिं असां ॿिनि जो कंपेरिजन ॾींदा आहियूं त असां कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कंदा आहियूं फास्टर. ऐं पॉजिटिव ईंदी आहे फास्ट. दिस कार इज मोर ब्यूटिफुल देन यू. हाँ, त सो ब्यूटिफुल पॉजिटिव आहे, पर असां हिते लिखियो आहे मोर ब्यूटिफुल. छो त असां ॿिनि ॼणनि जो ॿिनि कार जो असां कंपेरिजन कयो आहे. दिस कार इज ब्यूटिफुल देन योर्स. माना ॿिनि कार जो असां कयो आहे कंपेरिजन, इन खे असां यूज़ कयो आहे मोर ब्यूटिफुल. अगर असां हिकिड़ी ॻाल्हि कयूं असां सिर्फ़ु छा चऊं आहे? ब्यूटिफुल. द सुपरलेटिव डिग्री, when we describe 3 or more than 2 we can say or more, then we will use superlative degree. When we compare a person, thing within the group, असां ॿिनि खां मथे जॾहिं ॻाल्हि कंदासीं, डिस्क्राइब कंदासीं, असां यूज़ कंदासीं सुपरलेटिव डिग्री. द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन. माना अगर उन टाउन में तो खोड़ सारी बिल्डिंग 3 थी सघनि, 4 एक्सेट्रा, त इन खे असां यूज़ कयो द टॉलेस्ट. असां टॉल बि थी सघूं पिया, टॉलर बि थी सघूं पिया, बट वी हैव यूज़ टॉलेस्ट. सो असां हिकिड़ी बिल्डिंग जी ॻाल्हि कयूं त टॉल थियां. अगर असां ॿिनि जो कंपैरिजन कयूं त टॉलर थियां, बट वी आर टॉकिंग मोर देन 2, दैट इट मीन्स इट इज टॉलेस्ट. ऐं शी इज द फास्टेस्ट रनर. असां ॿिनि जी ॻाल्हि न पिया कयूं, हिकिड़ी ॻाल्हि न पिया कयूं, असां ॿिनि खां मथे ई ॻाल्हि पिया कयूं, त इन खे असां डिग्री यूज़ कई आहे फास्टेस्ट. This is the most beautiful car I have ever seen. असां खोड़ सारी कार ॾिठियूं आहिनि, हिकिड़ी या ॿ. असां चवंदा इहा कार जेकी अहिड़ी सां ब्यूटिफुल, इहा जेकी कार तमामु ब्यूटिफुल आहे जेकी असां ॾिठियूं. Here we have used most. अच्छा, तव्हां हिकिड़ी पॉइंट नोट कयो हूंदो, जॾहिं असां सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कंदा आहियूं, एग्जाम्पल टॉलेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटिफुल, त इन खां पहिरियों असां यूज़ कंदा आहियूं द. दैट इज द टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल. The superlative degree खां पहिरियों असां द जो यूज़ कंदासीं. हाणे रूल्स आहिनि कुझु, त पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कीअं डिग्रीज ठहंदियूं आहिनि. देयर आर सर्टेन रूल्स. असां कुझु असां शॉर्ट में प्रिसाइज डिस्कस कंदासीं. वन सिलेबल एडजेक्टिव. अगर को वर्ड वन सिलेबल जो आहे, जेको असां हिकिड़ी क्लॉज में पढ़ी सघूं था साए में, उन में असां ई आर ऐं ई एस टी जो इज़ाफ़ो कंदासीं. एग्जाम्पल tall, old, short. ये सब जेके वन सिलेबल वर्ड आहिनि. जॾहिं वन सिलेबल वर्ड जो असां कंपैरेटिव ऐं सुपरलेटिव डिग्री ठाहींदासीं त वी विल ओनली पुट एड ई आर और ई एस टी. टॉल विल बी टॉलर, टॉलेस्ट. द नेक्स्ट इज ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. सो इट्स अ सिंपल रूल. अगर वन सिलेबल आहे त ई आर ऐं ई एस टी जो एडिशन थींदो. नेक्स्ट, if the one syllable adjective ends with an E, just add R for the comparative form and ST. अगर को one syllable word E ते end को थिए त असां उन में comparative में R ऐं superlative में ST जो इज़ाफ़ो कंदासीं. You can see the large, larger, largest. Is it clear to all of you? Yes. Good. Wise, wiser, and wisest. Wide, wider, widest. These rules are clear? Okay, next. If the one syllable adjective ends with a single consonant with the vowel before it. अगर को word single consonant खत्म थे तो उन का पहिरों छा थो अचे vowel, double the consonant and add er for the comparative, and double the consonant and add
est in the superlative form. Example, thin. Now this thin ends in the consonant, but it is followed by vowel. The जेको last letter है उन्हें कैसा सा करना सी double आई उनमें er put करना सी comparative में आई est superlative. So thin, thinner, thinnest, big, bigger, biggest. This rule is clear to all of you? Yes. Next. Two syllable adjectives. जॾहिं को लफ़्ज़ जेको टू सिलेबल जो हुजे त उनमें सां कंपेरेटिव ठाहिण लाइ मोर यूज़ कंदा आहियूं ऐं सुपरलेटिव ठाहिण लाइ मोस्ट यूज़ कंदा आहियूं. एग्जांपल्स, पीसफुल. पीसफुल हिकिड़ो वर्ड न आहे, इट इज़ टू सिलेबल वर्ड. पीस एंड फुल. केयरलेस, फेमस. त इन में कंपेरेटिव में असां हणंदासीं मोर पीसफुल एंड सुपरलेटिव मोस्ट पीसफुल, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस, more famous and most famous. So when word two syllable is, we will add more in comparative and most in the superlative. Next. If the two syllable adjectives ending with y, change the y into I and add er for the comparative and then change the y into I and put est. Same rule है, बस I जगह इस y जगह इस I add करना सी and put er and est. Examples. Pretty. Pretty the y के खत्म है तो y के साथ convert करना सी change replace I will have er. Er the main form we used to, but there is a y, so we'll put iest. Pretty, prettier and prettiest. Happy, happier, happiest. I hope these examples are clear. Rules. Next. Two syllable adjectives ending in er, le or ow take er form for the comparative and est to the superlative. वही लफ्ज़ जेकी er, le और oy, ow जे खत्म थियन त असां comparative में er and superlative में est जो addition करना है. Examples, clever. er ते खत्म है तो we will put cleverer, cleverest. Next is narrow, narrower and narrowest. Gentle, gentler and gentlest. An adjective with three or more syllables. For adjective with these three or more syllables, you form the comparative with more and most. More and the superlative with the most. Examples. हाँ ये बिन असां syllable से use कियो तो beautiful, beautiful, convenient, comfortable. So these are three syllable word. जे three syllable word होंदो तो comparative में more and superlative में most जो इजाफा थींदो. So we will see beautiful. असां इनको जो राजी beautiful beautifulest is wrong because it is three syllable word. More beautiful, most beautiful, convenient, more convenient and most convenient. Next, exceptions. पर कुछ adjective add on जिनमें rules जगह जैसा सिखाएं er, est वगैरह. This is somehow irregular. वो ताकि याद करना. There are not exceptional cases. Example, good, better, best. These are irregular adjectives. ये ताकि याद करना है इनको rule 9. These are all are different. Bad, worse, worst, many, more, most, much, more, most, well, better, best, far, farther, farther, farthest, and little, less, least. The en basically subject and irregular. ये सब different. इनमें कोई rule ना है कि er या est जो इजाफा होंदो ये previous part rules में पढ़े हुए हैं. Two syllable adjective that follows two rule. पर कुछ adjective अड़ना जिनमें सब rule follow कर सकूँगा, but exceptional case में the adjectives can be used with er, est and with more and most. उनमें er, est use की जगह तो more and most वही use की जगह. But these are very rare and exceptional cases. Example, हाँ simple है तो इनके पास simpler भी चीज़ सकता, आई more simple चीज़ सकता, आई simplest and more simplest. हाँ कुछ अड़ना जिन simple, clever, gentle, quiet. इन्हें में सां भाई यूज करें सकूंगा EREST या more या most. Thank you, and if you have any question regarding adjectives, kinds and duties, you can ask. No activity. Question: how many and how much? Part discuss करें activity में. Can anyone share me the when we use how many and when we use how much? Can anyone share? Many when countable. Okay. Something is countable when we use many. Good. And we are using much then it's uncountable. Uncountable, exactly. So many, how many we use for the countable and how much with the uncountable. So you are ready for activity, all of you? Yes.
have a smile on your face, so I come to know that you are active, energetic, and present, lively. Yes, sir. Cheap, okay. Now we are going to start the activity, and you will be given passage. We can just simply 2 paragraphs. Circle kanda. Share the worksheet. Distribute this worksheet with the students. Okay. Read the paragraph. Okay. Now I am showing you these paragraphs. Do you got the worksheet, all of you? Yes, sir. Okay. Now see, read the paragraph, circle the adjectives and underline the nouns in each adjective modifiers. ता इनमें जेके adjectives ताकि इन paragraph में मिलन था, ता उन्हें circle करना, ऐं nouns के छा करना, underline. Okay. Now let's see. Scary monsters are found everywhere. Some are frightening and some are strange. There are enormous, hairy monsters and small, fuzzy monsters. Some are imaginary, like angry trolls that live in dark, damp caves or under old wooden bridges. Others live in dense, overgrown forests and eat slimy, disgusting food. Monsters can be green, red or black. If you spot a hideous monster, you should run away fast. Don't stare into their beady eyes. Don't stare at their sharp teeth. Just run. Keep your wide eyes looking forward so you don't trip and fall. Keep running until you see a beautiful house. Run inside the safe, warm house and shut the heavy door. So now circle the adjectives and underline the nouns. Solve this activity and then we will share the answers with you that what you have done. If you have any difficulty regarding, you can ask. अच्छा दियो जेके संदे students या teachers या जेके भी learners आगे दिसी रहे हैं उन्हें लाइयो if you have any difficulty regarding adjectives or degrees or kinds of discuss किया you can write in comment. आई उन्हें अलावा असां यो तासां share भी कंदा सी. You can see the जेके संदे live दिसी रहे हैं उन्हें learners लाए असां screenshot कहीं paragraph जो these are 2 paragraphs. You have to circle the adjective and underline the nouns. Now you have a few minutes to solve it. Any difficulty you have, you can ask questions, write in comments, and share it. When you find out the nouns, you will underline it and circle the adjectives. Uwe when the nouns ke describe karna. It is the one identification. So up to now we have done nouns, pronouns, and adjectives. You have any difficulty, any comment, you can write in comment in the section. We will answer your questions. And okay, have you done? Can you share your answers with us? Anyone else? The first, just tell me which adjectives you find. Scary. Okay. Okay, now check it. Scary monsters are found everywhere. Scary. Have you circled it? Yes. Good. And frightening. Have you done? Now frightening basically, you done it? Yes. Good. And some kind of? Yes, sir. Okay, good. Enormous? Enormous kind of? Have you done? Enormous is also adjective. It shows the size, And hairy? Have you done? Good. And small? Small, fuzzy, have you done? Okay. Imaginary, angry, have you done? Dark, dark. Okay, sir, good. Then damp. मकबूदा जो अगर दान सब ने लिखा है, जिन्हें लिखा है, तो you can discuss and explain करना दान show ना वो correct है, okay? Next is old, wooden. Dense, have you done? Okay, overgrown and slimy, disgusting. Okay, green, red, black. ये color show था करता है, ये सब adjective बच्चे. Hideous, have you done hideous? Okay, then sharp. क्या है teeth? Sharp. Beady, beady eyes. Okay, white.
White down there, sir? Yes, sir. Okay, have you done beautiful? Okay. Safe? Safe? Have you done? Okay. Warm. And the last is heavy. Yes. Acha, honey, you have done it very good. Last degree, small activity da kami nadi. Kano ya ta hame adjectives ta circle kya. Ta ya rule sikya. Degrees of adjective. Rule sikya. Positive, comparative, superlative. मानो कुछ ना adjective कुछ ना अगर ताम जेके अचंदा comparative and superlative degree के उधर. You should try it. Okay. The first is strange. Strange is Stranger. okay, and superlative will be Strangest. strange is very good. And actually the beautiful. More beautiful. अच्छा मूवमेंट में ऐसा छो यूज किया. सर वो beautiful का ज़्यादा beautiful. ब्यूटीफुल सब है पर रूल बुझा ना. लॉजिक. The beautiful का ऐसा बोला वाल भी यूज. सर बिन के जरे पार बेटा करना सी कंपैरिजन करना सी. No. Syllable. Sorry. Syllable होता है different more. Syllable 9 पर how many syllables? 3 exactly. Beautiful. The 3 syllable होता तसा यूज करना सी मोरी. Otherwise I know all of you are beautiful. Yes. Okay, next. Enormous. Most. छो छाजे करे enormous. Syllable. माँ ये बोल रहा enormous ना. Enormous. बड़ा syllable है sir. ठीक. Exactly. Good. आखिरी अब small. Comparative हो जाए. Smallest. So you have good idea about your concepts are clear. I am very happy that at least you are able to tell me the degrees of adjective. उनके अलावा finally जेके संगे असां learn ॾिसी रहे हैं. Any difficulty, any query, any question, you can write in comment. We will answer your queries. Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. I'm Bakhtawar Mawal, तांजी next English teacher. सर शफीक त तव्हांखे क्लियरली एडजेक्टिव्स जे बारे में अॼु सॼो सम्झाए छॾियो आहे डिटेल में कि एडजेक्टिव्स छा हूंदा आहिनि ऐं कहिड़ा उन्हनि जा काइंड्स हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे कीअं आइडेंटिफाई करे सघिजे थो ऐं उन्हनि जूं डिफरेंट डिग्रीज़ ऐं कीअं उन्हनि डिग्रीज़ जा सर्टन रूल्स आहिनि अकॉर्डिंग टू द सिलेबल कीअं असां उन्हनि खे कंपैरेटिव ऐं सुपरलेटिव में चेंज कयूं था उन जा यूसेज वग़ैरह सभु सर तव्हांखे सम्झाए छॾिया आहिनि अगर फर्दर के भी क्वेश्चंस हुजन त तव्हां कमेंट्स में उहे करे सघो था असां उहे ज़रूर एंटरटेन कंदासीं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज कॉल्ड वर्ब. हाणे एडजेक्टिव कुछ ज्यादा ही लेंदी थी वियो हुयो अॼु हिक ॾींहं में सभु पढ़ंदासीं त शायद सम्झ में न ईंदो ऐं जेके ऑनलाइन लर्नर्स आहिनि उन्हनि जे लाइ थोरो इहो आहे डिफिकल्ट छो जो बेसिक तव्हां बिल्कुलु बिगिनर्स न आहियो ही सिर्फ हिकु रिवीजन आहे तव्हांजे लाइ उन रिवीजन जे ज़रिए जेके शयूं तव्हां पास्ट में पढ़ी चुका आहियो उन्हनि खे सिर्फ असां रिवाइज़ करे रहिया आहियूं इन जे करे असां सिर्फ बेसिक शयूं खयूं आहिनि त जीअं हिकु क्विक रिवीजन थी वञे. एडजेक्टिव काफ़ी लेंथी हुयो काफ़ी शयूं तव्हां हुन में पढ़ियूं सो वर्ब जेको आहे उनखे मां क्विक रिव्यू ॾींदमि तव्हांखे सिर्फ इंट्रोडक्शन ॾींदमि त जीअं तव्हांखे वर्ब जे बारे में ख़बर पइजी वञे ऐं तव्हांखे इहो ख़बर हुजे त सुभाणे असां वर्ब खे वधीक डिटेल में पढ़ंदासीं उन जा काइंड्स पढ़ंदासीं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ब. नाउ द बेसिक क्वेश्चन that arises in our mind that what is verb. Now basically verb आहे छा असांखे ख़बर हुअणु खपे त सेंटेंस जॾहिं असां ठाहियूं था हिकु स्पीच चऊं था असां जॾहिं पार्ट ऑफ स्पीच आहे त वर्ब जेको आहे उहो पार्ट ऑफ स्पीच में छो आहे. हाणे हिते कुझु हिकु पिक्चर मां ॾिनी आहे जंहिंमें कुझु वर्ब्स लिखियल आहिनि मां तव्हांखे ॿुधायो न आहे त वर्ब आहे छा. क्विकली असां जेके ऑनलाइन लर्नर्स आहिनि उहे कमेंट में लिखी सघनि था त वर्ब छा हूंदो आहे ऐं हिननि पिक्चर्स में जेके वर्ब्स यूज़ थियल आहिनि उन सां हिकु हिकु सेंटेंस जेको आहे क्विकली को बि हिकु वर्ब था खणो ऐं उनजो क्विकली हिकु सेंटेंस ठाहे करे ऐं तव्हां कमेंट में जल्दी सां उनखे कयोसि लिखोसि त जीअं असांखे ख़बर पवे त तव्हांखे वर्ब जेको आहे उहो सेंटेंस में यूज़ करणु अचे थो या नथो अचे उन खां पोइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि त वर्ब आहे छा ऐं असां छो था यूज़ कयूं छो जो हिकु रिवीजन आहे त तव्हांखे ख़बर हुअणु खपे. ओके सो नाउ हियर
we have certain pictures. Now the first one says play, second one says cook, third one run, swim, laugh, read, sleep, and bark. Now these are 8 verbs, and along with these verbs, we have mentioned and we are showing you certain pictures so that you can get the idea that what is play. 2 players are playing with a football. Then cook, a lady is making something very delicious. That is to kuch thai rahi hai. Then run, two men, they are running. And swimming, a girl is swimming. Laugh, someone is laughing. Read, a boy is reading. Sleep, someone is sleeping. Then bark, a dog is barking. Now, I have already told you sentences. ठीक है, माता के verbally sentences बुधाए चले आने. So, okay, उम्मीद है कि ताहा दो comments में ये जरूर verbs use करा होगा. So let's ask from the learners who are sitting here physically with us. Okay, now guys, can you give me one sentence of any of the verb? Yes, anyone? I play cricket. I play cricket. Very good. I play football game. I play football game. Okay, that's very good. Ali So is swimming. Ali is swimming. So this is what? How we are using verbs. It means we know the use of verb. Key verbs used in the. Okay. Next. Okay. Now play. Okay. Now here I have mentioned one verb, that is play. Now the second activity that we are going to do is that play the लिखे लाए हिते. पर a sentence में play के असां केड़न तरीक़न सां यूज़ करे सघूं था. For example, I play cricket. जीअं हिक असांजे शागिर्द हिते चयो I play cricket. ठीक आहे? Play cricket. We are playing cricket. ठीक आहे? इन में ing जो असां inclusion करे छॾियो. I played cricket. हाणे हिते असां ed जो inclusion करे छॾियो, include कयो असां उन खे. त play जेको आहे उन खे असां डिफरेंट, हाणे इहो वरी छा आहे त हिन जो डिफरेंट यूसेज आहिनि, यूज़ आहिनि, त प्ले खे असां कीअं यूज़ करे सघूं था. हाणे ॾिसो, I play cricket. My sister plays guitar. We are playing football. हाणे प्ले आहे पर हुन में थोड़ी एडिशन थी रही आहे. सेकंड में एस जी एडिशन थी वई, उन खां पोइ ing जी एडिशन थी वई. ठीकु आहे? देन सेकंड वन cook. You cook well. She is cooking for her family. हाणे इहो जेको आहे इहा समझण जी शइ आहे त वर्ब जेको आहे, हाणे तव्हांखे मां डेफिनेशन ॿुधाईंदमि. ही सिर्फ़ एक्टिविटी हुई त जीअं तव्हांखे रिविजन थी वञे. नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन. हाणे वर्ब छा आहे? A verb is a word which shows action or state of being. जेको को कम ॿुधाए, एक्शन ॿुधाए, का शइ थी रही आहे, कम थी रहियो आहे, को एक्शन हुजे, स्टेट ऑफ बीइंग हुजे, ठीकु आहे, उहो वर्ब हूंदो आहे. हाणे वधीक एक्सप्लेन ईअं कीअं था करे सघूं? कुझु क्वेश्चन्स ईअं बि हूंदा आहिनि, माण्हू चवंदा आहिनि त वर्ब खां बिना छा असां सेंटेंस ठाहे सघूं था, या सब्जेक्ट खां बिना सेंटेंस थी सघे थो, ऑब्जेक्ट खां बिना सेंटेंस थी सघे थो. So what we can say that action का बगैर तो का भी शे न थींदी. So verb जेको आहे, that is the basic unit of a sentence. A verb is the central unit of any sentence or clause, and all the other words in a sentence take grammatical form based on how they relate to it. हाणे verb जेको आहे उन जी बेस ते ही असां ॿियूं शयूं ऐड करे सघंदा आहियूं. ठीकु आहे? त अॻियां हली असां तव्हांखे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बि पढ़ाईंदासीं. त सब्जेक्ट जेको आहे उन जी वर्ब सां कीअं अग्रीमेंट थियणु खपे ऐं इहो छो ज़रूरी आहे. त वर्ब जेको आहे उहो सेंट्रल यूनिट आहे, इलाही इंपॉर्टेंट आहे, सेंटेंस में हुअणु खपे. उन जे हिसाब सां ई असां ॿियूं शयूं इंक्लूड कंदासीं पंहिंजूं. अ वर्ब कैन एक्सप्रेस एक्शन एक्सप्रेस कंदो, जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो, रन, लिव, चेंज और स्टेट ऑफ बीइंग इज आर. शी इज, दे आर. ठीकु आहे? he was, we were. ठीक है? ये जेके आहिनि स्टेट ॿुधाइनि था.
और occurrence, happening, happen, become, occurrence show करे. Sentences can have more than one verb. जीअं कल कुछ sentences हुया pronoun जी exercise जेका हुई उनमें जेके कुछ sentences हुया जंहिंमें असां हिक खां वधीक pronoun भी ऐड कया हुया ऐं उनमें कुछ अहिड़ा हुया जेके मां बोल्ड न कया हुया. इन करे त जेके असां फिजिकल लर्नर्स वेठा हुया ऐं जेके ऑनलाइन भी आहिनि त उन्हनि खे ख़बर पइजी सघे त छा उन्हनि खे आइडेंटिफिकेशन थी सघे. ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे इन ॻाल्हि जी त जेके असां वटि हिते लर्नर्स हुया उन्हनि सभिनी इहा शइ आइडेंटिफाई कई त मैम तव्हां हिकु प्रोनाउन सिर्फ़ जेको आहे सो उहो तव्हां बोल्ड कयो आहे, जेके सेकेंड प्रोनाउन जेको सेंटेंस में आहे उनखे तव्हां बोल्ड न आहे कयो. छा इहो प्रोनाउन थींदो या न थींदो? त इहा आइडेंटिफिकेशन आहे. इट मीन्स के हुननि खे सम्झ में अचे पियो ऐं हुननि खे ख़बर पवे पई त वाकई आइडेंटिफिकेशन हुननि खे आहे उन शइ जी. त हाणे हिते ही छा पियो चवे, हिते चए पियो त हिक सेंटेंस में असां हिक खां वधीक वर्ब बि ऐड करे सघूं था. सो प्रोनाउन भी ऐड थी सघे थो. जीअं नाउन पढ़ायो हुयो तव्हांखे त नाउन जेको आहे उहो भी हिक खां ॿ वधीक थी सघनि था. हिक सेंटेंस में वर्ब बि थी सघनि था. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द काइंड्स ऑफ वर्ब. काइंड्स तव्हांखे अॼु डिटेल में न पढ़ाईंदासीं. असांखे ख़बर आहे त कुझु लेंदी थोरो थी वियो आहे. एडजेक्टिव असां कहिड़ा तव्हांखे डिटेल पढ़ाया आहिनि. बसि मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां थी सुभाणे जो इहो प्लान आहे. सम्झो त जीअं तव्हां अगरि क्लास वठो त तव्हां पहिरियां खां ख़बर हुजे त असां छा पढ़ंदासीं. सो काइंड्स सुभाणे असां डिस्कस कंदासीं. मां सिर्फ़ु तव्हांखे नेम्स ॿुधाए छॾियां थी ऐं नेम्स ॿुधाइण खां पोइ अॼु जी क्लास असां ख़तमु कंदासीं. सो काइंड्स ऑफ वर्ब्स: एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, finite verb, non-finite verb, dynamic verbs, stative verb, regular verbs, irregular verbs and auxiliary verbs. Now these are the kinds of verbs that we use when we make certain sentences. In the identification kiyan thindi, examples kiyan hunda ai kiyan asan inan ke identify kandasi, kiyan asan inan ke sentences mein use kandasi. Inan jo use jeko ahe uho asan subhane sikhandasi. So अॼु जे लाइ वर्ब उन जी डेफिनेशन, उन जी आइडेंटिफिकेशन क्लियर थी चुकी आहे. उन जा कहिड़ा पार्ट्स आहिनि, एडजेक्टिव्स आहिनि, उन जा काइंड्स, उन्हनि जूं डिग्रीज, एवरीथिंग इज क्लियर आई होप. पर अगरि तव्हांखे को क्वेश्चन हुजे, का क्वेरी हुजे त तव्हां उहा असांखे कमेंट में ज़रूर ॿुधाईंदव. असांजी SSDP जी टीम तमामु घणी महिनत करे रही आहे हिननि क्लासेस जे पोयां. इलाही घणा एफर्ट्स आहिनि. सो थैंक यू वेरी मच दोज हू आर वॉचिंग अस and those who are participating. पर अगर जेके न भी पार्टिसिपेट कनि था त बराए महिरबानी ॾिसंदा रहो ऐं असांखे ईअं इनकरेज कंदा रहियो त जीअं अॻियां बि इहो सिलसिलो अञा वधंदो रहे. थैंक यू सो मच. अॼु जे लाइ इंग्लिश जी क्लास जे लाइ एतिरो ई. इंशाल्लाह सुभाणे वरी नई टाइम ते मिलंदासीं. अल्लाह हाफ़िज़.